Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Imran. Welcome to my channel, Dr. Imran's Anatomy Lecture for Paramedics. So here today we will discuss the anatomy of digestive system of human being. Before going towards our lecture, I want to discuss with you the diagrammatic view of digestive system. So here, if you look at the diagrammatic view, first of all, you see here, this is the mouth, which is the receiving, which receiving food and any other thing else. Then the second number comes teeth. Teeth are the very important organs that help in digestion in different kind of ways. Teeth help in grinding and churning action of stomach. Help in grinding and churning action of food. Then there comes tongue. Look at that here. Tongue have different kind of taste buds, which decides if food is in good taste, it would be accepted, and the food with a bad taste is rejected. Then you see here, this is salivary gland. Salivary gland have also very important functions. One of the most important function is that salivary glands secrete saliva. Saliva itself is a watery fluid and itself is an antibiotic, and it releases saliva which intermix with food, and it creates a bolus. Then after salivary gland's action, tongue pushes the food into the esophagus. This is a long tube. This is a long tube which is called esophagus. Esophagus, in here esophagus, one function is occur which is called peristalsis, or it is called peristaltic movement. This is a wave-like movement. What is peristalsis? This is a wave-like movement which pushes the food into the stomach. Before food enters into the stomach, there you look here, this is a flap called sphincter. This open and allows the food to enter into the stomach. And when food comes into the stomach, there are different kind of things in stomach. Before discussing that things, first of all, the stomach has a thick layer, outer layer, which is called stomach wall. And stomach have 4 walls, which we will discuss in our lecture today. Different kind of enzymes are present in stomach, which break down the food particles into very small food particles. Then there would be a hydrochloric acid, HCl, present in the stomach. And what do hydrochloric acid, HCl, hydrochloric acid, that kills the germs. After this, when food would be in a form like paste-like, before paste-like, this is called chyme, chyme, chyme. This is the food which is intermixed with liquid, is called chyme. Then food moves into the small intestine. In small intestine, there are different kind of functions: bile, pancreatic juice, all
these helps the food to digest, and paste like food looks like paste in this. The small intestine have three parts. What is these parts? Duodenum, jejunum, and ileum. These are the three parts of the small intestine. Then comes large intestine. Large intestine, approximately it's about 4 to 5 feet long. And in large intestine, waste materials are removed, electrolytes and minerals moved into the body, into the blood. Then in large intestine, there are three more things which we called ascending colon, descending colon, and sigmoid. After that, debris passes out from anus. So this is the diagrammatic view which I have present you, the whole process of digestive system. Now we will move towards the description. We will describe one by one thing, each function of each thing here. First of all, you will that first part is called mouth. Mouth is a receiving organ which receives food particles, which received water, anything else. After mouth, then comes tongues. You know that the tongue is basically contain taste buds. It decides whether it accept food or it reject food. If the taste of the food is good, then definitely it will accept the food, and if the taste of the food is bad, then definitely it rejects the food. So this is the function of tongue. After tongue comes salivary gland. I have already discussed that the salivary glands are present here in cheeks, inner part of the cheeks, and salivary gland secreted saliva. Saliva is a watery fluid, and sometimes it's also called that saliva is itself an antibiotic. If we have a minor cut, a teeth cut in our mouth, initially we feel pain, but after something you will see there is no pain. Why? Because the saliva acts there and heals the wound, and then after few minutes we don't feel that any kind of pain in that region. Saliva. Then comes teeth. Teeth are the very important organs of the digestive system. Why? First, when bolus is inserted in the mouth, which is bolus? Bolus is basically a mixture of chyme and food particle, mixture of saliva and food particle. So when bolus is inserted in the mouth, salivary gland secretes saliva, and saliva mixes with the food. This is called bolus. And then comes teeth action. What is the action of teeth? Teeth are the basically responsible for grinding and churning action of stomach. It tears the large particles of the food. It tears the meat and any other thing that we want to eat. So the function of teeth is grinding and churning action, which helps the food to break down in small particles. And when
this bolus is mixed with saliva, then it would tongue pushes it towards the esophagus. This is a long tube. This long tube is called esophagus. Here esophagus, which is the passage of food, we discuss one of more important thing here. In esophageal region, there is a special kind of movement. That movement is called peristalsis. What is the peristalsis? Peristalsis is a wave-like movement. You have looked at that. If you go to the ocean and wave like this. So, same kind of movement occur here. And when wave-like movement occurs there, that pushes the food into the stomach. And when food comes here, before stomach, there is a flap present above the stomach, and this flap is called sphincter. And when food comes close to the stomach, the sphincter opens, relaxes, and it allows the food to come into the stomach. Now, after entering into the stomach, what we will discuss here? Stomach. Stomach is a sac-like organ. Stomach is a sac-like organ with a strong muscular walls. With a strong muscular walls. There are 4 walls of stomach. What? First one? First one is called mucosa. Second one is called muscular mucosa. Third one is called the first one is called mucosa, second one will be called submucosa, third one is called muscular mucosa, and fourth one will be called serosa. So here we discussed that the stomach has 4 walls. First one is called mucosa, which is the first layer of stomach. Second layer is called submucosa, which is the second layer of stomach. And third one is called muscular mucosa, which is the third one layer of stomach. And the fourth one is called serosa. So these 4 layers of stomach, what is the function of these? These protects the stomach from external environments. Here in stomach, after discussion of walls, 4 walls, we will discuss 2 more important things here. Here in stomach, there would be powerful enzymes like pepsin, renin. What do these enzymes? These enzymes break down fats into small particles and help in digestion. And HCl also present in the stomach. HCl means hydrochloric acid is also present in the stomach. And what HCl will do here? HCl, hydrochloric acid, will kill the germs in the stomach. So, when food present in the stomach mixes with the acid in stomach, this acid is already present in the stomach. When food enters into the stomach, after break down some particles, then it mixes with the
gastric acid, and this is called chyme. After discussing the stomach, we will move towards the next part. Next part is called small intestine. Food enters into the small intestine. Here small intestine has three parts: duodenum, jejunum, ileum. We are discussing digestive system here. So when food enters into small intestine, we say that here small intestine have three parts. First part is called duodenum, second part is called jejunum, and third part is called ileum. So these are three parts. Here in small intestine, there is another function of biles. Bile stores in liver and gallbladder. What is bile? Bile is a greenish fluid which is stored in liver and in gallbladder. It's secreted some greenish fluid which helps in digestion of food. And here present, after bile, there present a pancreas. And what will do pancreas? Pancreas will release pancreatic juice, and that will also help in digestion of foods, break down the food into small particles. Here, food when it comes into the small intestine, food is almost in the form of paste. When food enters into the small, when food travels from small intestine to the large intestine, the food is almost in the form of paste. Now, after discussing the small intestine, we will go to the large intestine. One most important thing we want to discuss that what is the length of small intestine. Most of the students create questions. What is the length of small intestine? Approximately 22 to 23 feet. The length of small intestine is 22 to 23 feet. Now it comes to the large intestine. The length of large intestine. What is the length of large intestine? Large intestine length is approximately 4 to 5 feet. 4 to 5 feet long it's. Different kind of functions occurs here in large intestine. Electrolytes and water removed from the food. When food in the form of paste enters into the large intestine, here water and electrolyte and nutrients, some important things present in the paste are removed out from the large intestine, forwarded to the direct into the body. Many kind of bacteria like bacteroid, acidophilus also help in digestion. So the first part of large intestine is called cecum. We will discuss three more things here in large intestine. What we will discuss in large intestine, three more things. Here, look at that here. These are the finger-like projections which are called villi. This is called villi. Capillaries are present on the surface of villi. So we will discuss three things here.
finger-like projection is called villi. So three things here. One is called ascending colon, the movement which goes upward. Ascending means ascend, going upward. So this part which moves upward is called ascending colon. And when the same parts comes to downward, this is called descending colon. Ascending colon moves upward and descending colon moves downward. Then there is another kind of colon that is called sigmoid colon. What is sigmoid colon? This is a horizontal position. This position here. This is called sigmoid colon. We will discuss three things here in large intestine. First one is called ascending colon. Second one is called descending colon. And the third one is called sigmoid colon. So, what is villi? Villi is a finger-like projection. Here villi, finger-like projection, some arteries present, and these the electrolytes and the nutrients and the carbohydrates all are absorbed into the arteries, and the debris of food will secrete it out. So this finger-like projection is called villi. The upward direction is called ascending colon, downward direction is called descending colon, and this is horizontal type is called sigmoid. So after discussing the large intestine, we will come to the last point, that is called anus. Anus is the last part of digestive system. Unwanted the food which is in the form of debris, which is in the form of waste material, are passed out from the anus. So this is the whole scenario of digestive system. Before we will go towards next, I will repeat again this on diagrammatic view. Look at that. The human digestive system have these parts. First one is mouth. Mouth is the receiving organ that receives the foods and water. After mouth, then comes teeth, tongue, salivary gland. So what is the function of tongue? I've already discussed with you that there are taste buds located on the surface of the tongue, which decides whether the food is accepted or rejected. Then here are salivary glands, and salivary gland secretes saliva. And when salivary gland secretes saliva, in the meantime, teeth work their own. What will they work? They will tear the food into small particles. When teeth will tear the food into small particles, in the meanwhile, in the same time, salivary gland secretes the saliva which intermix with the food, and that is called bolus. This position is called bolus, when food and watery material, saliva, intermix with each other. This is called bolus. After bolus created,
there is a special kind of movement here, and tongue scrolls that food into the esophagus, and when food comes down into the esophagus, there would be a peristaltic movement. The movement we often call peristalsis. What is peristalsis? It's a wave-like movement. The wave-like movement is called peristalsis. So when the food enters in esophagus, the esophagus moves like a peristaltic movement, and which pushes the food here. When food comes here, there you seeing this is a sphincter. This sphincter opens and the food comes down into the stomach. And here in stomach, when food enters here, there are special enzymes here like pepsin, like renin, hydrochloric acid is present here. And when that food, which is called bolus, then it is intermixed with the other watery liquid. Then when food is present here, then gastric acid mixed with this food, and this food which is called chyme. Here we have discussed also 4 layers of stomach. There are 4 layers of stomachs. Which one are? First one is called mucosa. Second one is called submucosa. Third one is called muscular mucosa. And fourth one is called serosa. So when food is in the form of chyme, then stomach pushes the food into the small intestine. Here in small intestine, there are 3 parts of small intestine. First one is called duodenum, second one is called jejunum, and third one is called ileum. So here, when food enters into the small intestine, bile secrete greenish fluid. What is bile? Bile is a greenish fluid which is stored in liver and gallbladder. When bile is secreted, that helps the food in digestion. Then you're seeing here pancreas below the stomach. What will do pancreas? Pancreas secretes pancreatic juice, and that pancreatic juice also will help in digestion. After small intestine, food comes into the large intestine. Here in large intestine, there are finger-like projections called villi. And here in villi, there are superficial arteries, and in large intestine, electrolytes, nutrients, carbohydrates moved into the body, and the debris, cellular debris, waste material will push us down into the rectum. So there are 3 things which we have discussed in large intestine. 1131 finger-like projections called villi, and in villi, first one which goes in the direction of upward is called ascending colon, which comes downward is called descending colon, and which one is in horizontal position is a sigmoid colon. So when food waste materials passes here and passed out through the anus. So this is the main topic which we have discussed here. Now I will repeat this topic in Urdu. Students, आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग का है.
डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम देखा जाए तो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और हर पार्ट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द डिटेल, इससे पहले कि मज़ीद में डिटेल में जाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं, डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। डायग्रामेटिक व्यू में अगर आप देखें, ये आपके सामने जो पिक बनी हुई है, इसमें सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है? माउथ, मुंह आपको नज़र आ रहा है। माउथ के बाद सेकंड जो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, वो है ज़बान, टंग। टंग के बाद जो आपको चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, टीथ, दांत आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। दांतों के बाद यहाँ पे बैक साइड पे एक बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। गुदूद होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो राल खारिज करते हैं, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? एज़ोफेगस। खुराक की नाली है जिसको हम क्या कहेंगे? एज़ोफेगस। एज़ोफेगस के बाद ये गोल सा आप देख रहे हैं फ्लैप है, एक ढक्कन है, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है? जब खाना इसके करीब पहुंचता है तो ये ओपन हो जाता है और स्टोमक में खाना चला जाता है। अब जब खाना आ गया स्टोमक के अंदर, मैदे के अंदर जब खाना आ जाता है, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस और होते हैं। उन एक्शंस पे जाने से पहले हम देखते हैं कि स्टोमक के इर्द गिर्द एक लेयर होती है, वाल होती है, और ये लेयर क्या करती है? स्टोमक को प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है। और अगर देखा जाए तो स्टोमक की कितनी वाल्स होती हैं? 4 वाल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर म्यूकोजा एंड सीरोजा। फिर यहाँ स्टोमक के अंदर जब खाना पहुँचता है ना, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स किसको कहते हैं? खामरों को कहते हैं। और अगर इसको आप डिफ़ाइन करें तो एंजाइम्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एंजाइम्स एक्ट एज कैटालिस्ट। एंजाइम क्या है? एक कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करता है। और कैटालिस्ट किसको कहते हैं? मददगार को कहते हैं। अगर कोई भी काम है, एक हो रहा है, उसमें कुछ लोग आके हेल्प आउट कर देते हैं, तो वो काम क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। तो दैट इज़, वो फिर क्या कहलाएगा? कैटालिस्ट कहलाएगा। तो बेसिकली एंजाइम एक्ट एज अ कैटालिस्ट। ये क्या करते हैं? खाने को हाजमे में मदद देते हैं। फिर यहाँ पे पेप्सन होता है, रेनन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी फूड्स सबको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करते हैं। फिर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को किल करता है, मारता है जर्म्स को। अब ये सब कंडीशन जब हो जाती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, जो बेसिकली गैस्ट्रिक एसिड खाने के साथ मिलता है, खाना और नरम हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। अब जब खाना यहाँ से आ जाएगा छोटी आंत में, अब छोटी आंत में जब खाना आएगा तो छोटी आंत में डिफरेंट फंक्शन होगा। छोटी आंत में बाइल है, सब्ज़ी माइल रतूबत है, जो कि जिगर और पैनक्रियाज में, जो कि जिगर के अंदर पाई जाती है और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर, जिगर और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है। और उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि वो डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। अब जब खाना छोटी आंत में आता है तो यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं छोटी आंत के। पहले को हम जेजुनम कहते हैं, दूसरे को हम डेजुनम कहते हैं और तीसरे को हम इलियम कहते हैं। अब जब खाना छोटी आंत में जब आता है तो ये सारी चीज़ें, बाइल भी एक्ट करती है, पेनक्रेटिक जूस भी एक्ट करता है, मुख्तलिफ़ किस्म में एंजाइम्स भी एक्ट करते हैं, तो वो जो खाना होता है ना, वो पेस्ट की शक्ल में हो जाता है। अब वो खाना जब पेस्ट की शक्ल में होता है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बाद खाना आ जाता है बड़ी आंत में। अब जब बड़ी आंत में खाना आया तो यहाँ पे डिफरेंट एक्शंस हैं। यहाँ पे विलाए हैं जो कि उनके अंदर कैपिलरीज होती हैं,
और जो एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी की जितनी चीज़ें हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो बच जाता है, वो फुजला जिसको हम कहते हैं, वो बच जाता है, वो एनएस से बाहर आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या था, एक डायग्रामेटिक व्यू था। अब हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अगर इन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए, जैसे कि डायग्राम में मैंने पहले कहा कि सबसे पहले क्या आता है, माउथ आता है। तो माउथ का फंक्शन क्या है? माउथ क्या है? रिसीविंग ऑर्गन है, जो किसी भी चीज़ को क्या है, खुशामदीद कहता है, रिसीव करता है। माउथ के बाद टंग आ जाती है, ज़बान आ जाती है। अब ज़बान के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। क्या होते हैं जी? ज़बान के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, और ये टेस्ट बड्स ये फैसला करते हैं कि फूड को हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर तो फूड लजीज होगा, टेस्टी होगा, तो क्या करेंगे ये टेस्ट बड? ज़ाहिर बात है एक्सेप्ट करेंगे फूड को। और अगर खाना होगा बासी होगा, पुराना होगा, स्मेल वाला होगा, उससे आ रही होगी, तो ज़ाहिर बात है फिर टेस्ट बड्स क्या करेंगे? उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो जो टंग का एक्शन है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस, या तो वो खाने को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अब टंग के बाद अगर आ जाए तो सलेवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये बेसिकली ग्लैंड्स होते हैं जो यहाँ चीक्स के अंदर पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है? ये जो राल खारिज होते हैं ना, जो पानी अंदर मुंह के अंदर आता है, राल आती, तो ये वो बेसिकली खारिज करते हैं। इनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। देखें, जब हम खाना मुंह में लेके जाते हैं तो वो तो क्या कहते हैं कि गीला तो नहीं होता है, खुश्क होता है। जैसे ही मुंह में हमने नवाला डाला तो इधर से क्या हुआ? सलेवरी ग्लैंड ने एक्शन किया, सलाइवा सिक्रीट हुआ, वो उस खाने के साथ मिक्स होगा, और इधर से टीथ अपना एक्शन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग एंड चर्निंग एक्शन। जो चीर फाड़ होती है, सख्त खाना होगा, जैसा भी होगा, वो चीर फाड़ दांत करेंगे। तो इधर से सलेवरी ग्लैंड सलवा सिक्रीट करेंगे, इधर से दांत क्या करेंगे? उसकी चीर फाड़ करके उसको छोटे पीसेस में करेंगे। तो ये हमारे पास एक गीला सा आ जाएगा, जिसको हम नवाला कहते हैं उर्दू में, और अगर इसको इंग्लिश में कहें तो बॉलेस इसको कहते हैं। एनाटॉमिकल लैंग्वेज में बॉलेस इसको कहेंगे, नवाला। अब देखें कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे। और अगर सलेवरी ग्लैंड्स को देखा जाए तो ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो सलाइवा जो है ना, बेसिकली इट्सेल्फ एंटीबायोटिक है। ये जो आपकी राल तबकती है ना, ये इट्सेल्फ एंटीबायोटिक है। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि जब हम खाना वगैरह खाते हैं, अचानक कट लग जाता है ज़बान के ऊपर दांतों के ज़रिए, वक्ती तौर पर बहुत शदीद पेन होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स यू फॉरगॉट इट, आप इसको भूल जाते हो। वाई? वो इसलिए कि जो सलाइवा है वो इटसेल्फ एंटीबायोटिक है, वो उसको हील कर देता है, फिर हमें पता ही नहीं चलता। तो बल्कि इसमें तो चाइनीज़ डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी रिसर्च आई है, जो अक्सर मैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता रहता हूँ, कि देखें सलाइवा एंटीबायोटिक है। तो चाइनीज़ की मैं एक दफ़ा स्टडी पढ़ रहा था कि वो चाइनीज़ क्यों सेहतमंद होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इनको बीमारियाँ शारियाँ नहीं होती, ज़्यादा लोग बिल्कुल स्लिम से होते हैं। और उनके ऊपर उसने चाइनीज़ ने लिखा कि मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ जो है ना, दिन में 40 से 50 दफ़ा जो राल खारिज होती है ना, उसको निगल लेते हैं आगे। अब पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि राल ये क्या है? सलाइवा इटसेल्फ एंटीबायोटिक है। तो ये जब अंदर जाएगा स्टोमक के अंदर, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो जर्म्स हैं उनको किल करेगा। तो उस स्टडी में था कि चाइनीज़ जो है ना 50 से 60 दफ़ा दिन में सलाइवा जो है ना निगलते हैं। वो एक पूरी स्टडी उसके ऊपर आई हुई थी। तो उसने फिर ग्राफ में नीचे लिखा हुआ था कि दैट्स वाई आप देखते हैं कि चाइनीज़ जो है ना वो सेहतमंद होते हैं, उनको बीमारियाँ कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के। तो ये तो आ गया हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स का। अब सलेवरी ग्लैंड्स के बाद टीथ को भी हमने डिस्कस कर लिया। टीथ के बाद हमारे पास आ जाता है एज़ोफेगस। एज़ोफेगस क्या है? खुराक की नाली है।
अब ज़बान क्या करती है, वो खाना जब नरम हो जाता है तो उसको धकेल देती है, नीचे की तरफ धकेल देती है, जो एज़ोफेगस होती है, जो लॉन्ग ट्यूब होती है, खुराक की नाली जो लंबी होती है, उसमें धकेल देती है। अब जब खाना एज़ोफेगस में पहुंचता है ना, तो यहाँ पे स्पेशल किस्म की मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट वेव लाइक होती है, जैसे समंदर की लहर हरकत करती है ना, उस तरह की मूवमेंट होती है। और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसी ही होती है, वो खाने को पुश कर देती है नीचे। जब खाना यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर एक फ्लैप सा, ढक्कन सा होता है जो ओपन हो जाता है और खाना नीचे आ जाता है स्टोमक के अंदर। अब जब खाना स्टोमक में आ गया तो स्टोमक को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। स्टोमक क्या है, सैक लाइक ऑर्गन है। पहले मैं बता चुका हूँ कि स्टोमक के अंदर जब खाना आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स होते हैं, रेनिन, पेप्सिन, ये सारे, ये क्या करते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टोमक के अंदर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इन जर्म्स को किल करता है। फिर ये जो खाना होता है ना, ये अब और ज़ाहिर बात है नरम होना होता है। ये खाना क्या होता है, इंटरमिक्स होता है एसिड के अंदर। जो स्टोमक का एसिड होता है ना, वो भी साथ मिक्स होता है, तो ये एक बहुत नरम किस्म का खाना बन जाता है, जिसको जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको हम कायम कहते हैं। कायम किसको कहते हैं, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। ऐसा खाना जो नीम हजम हो, उसको हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। अब ये खाना किसके साथ, एसिड के साथ मिल के ऐसा होता है। फिर वो खाना नीचे आ जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आ जाता है। अब यहाँ पे जो स्टोमक है ना, उसकी वॉल्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले मैं बता चुका हूँ कि स्टोमक की कितनी लेयर होती हैं। जो बेसिकली स्टोमक की जो लेयर्स होती हैं, उनका काम क्या है, स्टोमक को प्रोटेक्ट करना। 4 लेयर्स होती हैं स्टोमक की। जो पहली लेयर होती है वो क्या कहलाती है, म्यूकोजा। सेकेंड लेयर सब म्यूकोजा। तीसरी लेयर मस्कुलर म्यूकोजा। और जो चौथी लेयर है वो क्या कहलाती है, सिरोजा कहलाएगी। तो 4 लेयर्स हमारे पास आ गई, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर म्यूकोजा और सिरोजा। अब जब स्टोमक के अंदर से खाना आ गया छोटी आंत में, अब छोटी आंत 23 से 24 फीट लॉन्ग होती है बेसिकली। जब खाना छोटी आंत में आया तो छोटी आंत में खाने ने पेस्ट की शक्ल में बनना होता है। यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स एक्ट करते हैं। एंजाइम्स का मैं पहले बता चुका हूँ कि एंजाइम्स क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट किसको कहते हैं, मददगार को कहते हैं, जो हेल्प आउट करता है, किसी भी काम में रफ्तार तेज़ करता है जल्दी ताकि ये ख़त्म हो जाए, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो एंजाइम्स को उर्दू में क्या कहते हैं, खामरे कहते हैं। तो ये खामरे क्या कहते हैं, मददगार होते हैं खाने को हेल्प आउट करने में। तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, एंजाइम्स एक्ट एज कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, जो को खाने में हाजमे के तौर पर मदद देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्ट एज कैटलिस्ट। अब जब खाना यहाँ पे छोटी आंत में आया तो यहाँ पे क्या होता है, बाइल होती है। बाइल क्या होती है, एक सब्जी बाइल, रतूबत होती है। और ये बाइल जो है ये लिवर के अंदर स्टोर होती है। और नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लिवर है, और इसके नीचे क्या है, गाल ब्लैडर है। तो ये सब्जी माइल रतूबत जो है लिवर और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है। और जब बाइल और लिवर खारिज करेंगे ये रतूबत सब्जी माइल, तो ये क्या करेगी, खाने को हेल्प आउट करेगी, हाजमे में मदद देगी। खाना जितने भी जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो मज़ीद ब्रेक डाउन हो जाएंगे। फिर इसी तरह ये नीचे स्टोमक के नीचे आप देख रहे हैं, ये क्या है, पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाज भी पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, और पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, वो भी ब्रेक डाउन करेगा फूड पार्टिकल्स को। अब जब ये कंडीशन आएगी ना, तो यहाँ पे फूड एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब खाना छोटी आंत से निकलने लगा होता है ना, बड़ी आंत की तरफ ट्रांसफ़र होने लगता है, तो उसको हम एक पेस्ट की शक्ल में समझते हैं वहाँ पे। अब अगर छोटी आंत में देखा जाए तो इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा क्या कहलाता है, ड्यूडेनम,
दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? जेजुनम। और तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है? इलियम। अब जब पेस्ट की शक्ल में खाना आ जाता है ना, तो फिर खाना नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत 4 से 5 फीट लॉन्ग होती है। बड़ी आंत के अंदर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी जो बचा कुछ खाना रह जाता है ना, उसको भी हाथ में ज़ाहिर बात है कुछ मदद देती है। फिर कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो बैक्टीरियाइड या एसिडोफिलिस उसको बोलते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, मज़ीद खाने को हाजमा कर देते हैं, जो बची कुची गुंजाइश होती है उसको भी मज़ीद कर देते हैं। और अब यहाँ बड़ी आंत जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो बॉडी की तरफ चली जाती हैं। और जो डेब्रीज होती हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, वो रेक्टम के ज़रिए, एनस के ज़रिए बाहर खारिज हो जाता है। अब जो बड़ी आंत है, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये आप देख रहे हैं ना, विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके ऊपर आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी। तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, विलाई, इसको हम डिवाइड कितने में करेंगे? 3 में करेंगे। एक होगा असेंडिंग कोलोन, एक होगा डिसेंडिंग कोलोन, और एक होगा ट्रांसवर्स कोलोन या सिग्मॉइड कोलोन। जो ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? असेंडिंग कोलोन, असेंड मीन ऊपर। जो नीचे की तरफ आ रहा होगा हिस्सा, उसको क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलोन, जो डाउनवर्ड आ रहा है। जो ट्रांसवर्स इस तरफ है, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे। तो ये बेसिकली सारा सिस्टम है जिसके ऊपर हमने अभी सारी ये चीज़ें बयान की हैं हमने। अब टॉपिक को समराइज़ करते हैं, थोड़ा सा समराइजेशन की तरफ आते हैं टॉपिक की। देखिए, इस टॉपिक में हमने खाना कैसे हज़म होता है ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने डिस्कस किया। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हमें पता होने चाहिए, अपने याद होने चाहिए। अब इन पार्ट्स को देखा जाए तो सबसे पहले माउथ आता है, सेकंड नंबर पे टंग आती है, फिर टीथ आते हैं, फिर सलेवरी ग्लैंड्स आते हैं, फिर उसके बाद एजोफेगस आता है, एजोफेगस के बाद स्टमक आएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। और इसको हम ब्रीफली व्यू करें तो एक छोटा सा ब्रीफ व्यू इसका देना चाहता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं लेक्चर को। ब्रीफ व्यू क्या है? अगर आप इसको माउथ को देखें तो माउथ क्या है? रिसीविंग ऑर्गन है। ये क्या कहता है? खाने को रिसीव करता है। उसके बाद ज़बान आती है, टंग। तो ज़बान का फंक्शन क्या है? ज़बान का बेसिकली फंक्शन ये है कि उसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं जो फूड को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद टीथ आ जाते हैं। टीथ का मैंने आपको बोला कि टीथ क्या है? ग्राइंडिंग एंड चर्निंग एक्शन ऑफ फूड। खाने को छोटे हिस्सों में चीर फाड़ जो करते हैं वो दांतों का काम है। इन द मीन वाइल क्या होता है? सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं, राल खारिज करते हैं, जो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बॉलस कहते हैं। अब जब ये खाना नरम हो जाता है तो ज़बान क्या करती है? स्क्रॉल करके उसको नीचे फेंक देती है। कहाँ पे? एजोफेगस में। जब एजोफेगस में खाना आएगा तो यहाँ पे वेव लाइक मूवमेंट आएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? पेरिस्टालसिस। और इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खाने को नीचे धकेलेगी। ये फिर फ्लैप, एक ढक्कन है जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं स्टमक के ऊपर। ये हटता है, स्टमक खुलता है, खाना नीचे आ गया स्टमक के अंदर। अब जब खाना स्टमक के अंदर आया तो स्टमक की लेयर्स हमने पढ़ी। 4 लेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं स्टमक को। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर म्यूकोजा एंड सीरोजा। ये 4 लेयर्स हैं।
फिर स्टमक के अंदर जब खाना आता है ना तो वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, हामरे जिनको हम कहते हैं। एंजाइम्स को क्या कहते हैं? एक्ट एज कैटलिस्ट। ये मददगार होते हैं या खाने को हाजमे में मदद देते हैं। इसमें पेप्सिन है, रिनिन है, टाइलिन है, ये एंजाइम्स हैं जो इसको हेल्प आउट करते हैं फूड को। इसके अलावा फूड जो है गैस्ट्रिक एसिड के साथ जब मिक्स होता है तो उसको पार्शली मिक्स्ड फूड कहते हैं, यानी कि नीम हजम शुदा जो खाना होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं। और HCl होता है, वो क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को किल करता है। अब जब खाना यहाँ से आ गया किसमें? छोटी आंत में आ गया। जब छोटी आंत में खाना आया तो छोटी आंत को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट वन क्या कहलाएगा? ड्यूडेनम। सेकंड वन क्या कहलाएगा? जिजोनम। एंड थर्ड वन क्या कहलाएगा? इलियम। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल है किसका है? लिवर का और गाल ब्लैडर का। अब लिवर और गाल ब्लैडर क्या करेंगे? रतूबत खारिज करेंगे, सब्जी माइल रतूबत खारिज करेंगे। ये सब्जी माइल रतूबत खारिज करेंगे तो वो भी क्या करेंगे? जिसको हम क्या बोलते हैं? खारिज करेंगे जब, तो वो उससे क्या होगा? खाना हजम होने में मदद मिलेगी। अब जब यहाँ पे तीसरा फंक्शन क्या था? पैनक्रियाटिक जूस का। पैनक्रियास क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, वो भी खाने में हेल्प आउट करेगा। अब जब खाना पेस्ट की शक्ल में ऑलमोस्ट हो जाएगा छोटी आंत में, फिर खाने ने ट्रांसफ़र हो जाना किसकी तरफ? बड़ी आंत की तरफ। और बड़ी आंत में भी एंजाइम्स कुछ और इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया, एसिडोफिलिस बैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? खाने को मज़ीद हेल्प आउट करते हैं। और जो चीज़ काम वाली होती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें वाटर होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सारे बॉडी की तरफ चले जाते हैं। और जो सेलुलर डेब्रीज होती हैं वो क्या कहती हैं? रिमूव हो जाते हैं। पहला जो हिस्सा है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको हम क्या बोलते हैं? सीकम कहते हैं। फिर उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है? विलाई। इसमें असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। असेंडिंग कोलोन जो अपवर्ड मूवमेंट, डिसेंडिंग जो डाउनवर्ड है, जो हॉरिजेंटल है उसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन होगे। तो ये आज का टॉपिक था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।